अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मरतबा फिर क्रिकेट क्लिनिक के साथ मुदस्सिर मिर्ज़ा, आसिफ अहमद और साइम कश्मीरी हाजिर हैं। द क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हैज़ स्टार्टेड और इस दफ़ा स्पेशल बात ये है कि हम तीन जिस मुल्क में बैठे हुए हैं यूएसए में, वो को होस्ट कर रहा है। तो इनफैक्ट अभी जो मैचेस स्टार्ट हुए हैं उसमें ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो यूएसए में ही हुए हैं। सो वो भी थोड़ा सा हमारे लिए और मीनिंगफुल एक चीज़ बन जाती है बिकॉज हम खुद भी कोशिश करेंगे कि कुछ मैचेस हम अटेंड करें, तो उसमें भी आपको अपना पर्सपेक्टिव देंगे। अभी कुछ मैचेस हुए हैं, सम मैचेस हैव बीन प्रीटी क्लोज, जैसा आपने देखा है, एक सुपर ओवर भी हुआ। इस एपिसोड का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट मैच है यूएसए के अगेंस्ट ऑन दिस थर्सडे, दिस कमिंग थर्सडे, तो उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। विल पिक आवर स्क्वाड, a squad of 11 players, and इंडिपेंडेंटली हम स्क्वाड को पिक करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे और अपनी डिस्कशन करेंगे उस बेसिस में। um, तो लेट मी ओपन इट अप। आप दोनों में से मुदस्सिर, आसिफ, क्या कहेंगे बिग पिक्चर यूएसए के मैच, यूएसए का जो कनाडा के साथ मैच हुआ है? आई मीन, they chased very well. At one point it seemed that 190, 195 was a big total, but उनका जो उनके जो नंबर 4 और नंबर 5 प्लेयर्स थे, दे जस्ट जिस तरह के छक्के मारे हैं, 10 छक्के मारना, क्या कहेंगे ओवरऑल? क्या आपकी वाइब्स क्या आ रही हैं 2 days बिफोर द मैच? हाँ यार, सब पहले तो सबको मुबारक हो जितने फैंस हैं क्रिकेट के। अभी नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट आई है तो पीपल यूज्ड टू फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कैच मैचेस। कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई पाकिस्तान में देख रहे हैं, दुबई में देख रहे हैं। आई थिंक पीपल शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी कि क्रिकेट इज हियर, तो एंजॉय करना चाहिए। हाँ तो यार, बस थोड़ा सा स्टार्ट थोड़ा लाइट था कि सेरेमनी वाज मिसिंग। बॉलीवुड को दे देते ठेका तो दे कुड हैव डन लाइक very good ceremony. Game was really good. Opener game 190 between India, between America and Canada. कनाडा। तो I think it's a different flavor के इतनी ज्यादा टीमें हैं तो future is bright के I think 18 teams are playing this final round after long qualifiers. तो कुछ 20 soccer no? World 20 Cup teams. yeah, soccer वाली कुछ है कि with time hopefully the game is evolving or क्रिकेट इज हियर टू स्टे। ये मार्केट तो बहुत मैसिव होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज बल्कि खबर आई कि पैट कमिंस साइंड अप फॉर सैन फ्रांसिस्को। आई थिंक इट्स अ बिग डील। अगर कमिंस खेलेगा तो हो सकता है हमारा शाहीन या कोई बाबर कोई, आई थिंक सम ऑफ देम विल एंड अप स्टेइंग हियर। एनीवेज, तो गेम बहुत शानदार था। ओपनिंग गेम के हिसाब से 10 छक्के वो एंटरटेनिंग थे। टिम्बा बबूमा के लॉस कजन के तो ये इट वाज अ गुड गेम। बल्कि अभी सारे गेम अच्छे हो रहे हैं। जो लो स्कोरिंग हो रहे हैं उसमें फिर लोग ये देख रहे हैं कि जो दूसरी टीम्स हैं दे आर बॉलिंग रियली वेल। थोड़े से ज्यादा लो स्कोरिंग हो गए, बट पर्सनली आई प्रेफर 150 160 गेम्स। उसमें बैट और बॉल में कंपटीशन तो होना, और फ्लैट विकेट जिस तरह आईपीएल में क्रिकेट होती है वो तो मजा नहीं आता ना उस तरह। तो इट लुक्स एक्साइटिंग और होपफुली सवाए वो यूएसए वर्सेस कनाडा गेम के जो कि हाई स्कोरिंग था, या और बाकी मैचेस जो हैं वो थोड़े से लो स्कोरिंग। और उसके अंदर भी खैर हम डिस्कस आगे जाके कर लेंगे कि डैलस के अंदर ही 2 गेम्स हुई हैं। एक नाइट गेम जो यूएसए कनाडा, वेरी हाई स्कोरिंग, विकेटें भी नहीं गिरी और वो 195 बड़ा इजीली चीज हो गया एंड में। और दूसरा जो आज मैच हुआ है आपका नेदरलैंड वर्सेस नेपाल, तो वो तो डे मैच था। मे बी दैट हैज समथिंग टू डू विद द कंडीशंस दैट इट वाजंट एज बैटिंग फ्रेंडली, और शुरू में काफी बॉल जो है सीम भी कर रही थी। मगर यार स्कॉटलैंड को देखो ना यार, वही जॉफर आर्चर मार्क वुड ओपन कर रहे हैं और दे स्कोर 19 10 ओवर्स। और उसको आदिल राशिद को शायद पहली बॉल पे छक्का मारा है उन लोगों ने। तो वो स्कॉटलैंड वाले हमसे बेहतर खेल रहे थे इंग्लैंड को कि, और दे डिजर्व दैट 1 पॉइंट। हु नोस कि वो गेम में होना क्या था आगे जाके। हाँ, हो तो सकता है जीत भी जाते हैं, यू नेवर नो। हु नोस, डीएल पे जीत जाते हैं, वैसे जीत जाते हैं। तो Yeah. स्कॉटलैंड आई थॉट प्लेड रियली गुड। और अफगानिस्तान का था वो मेनो था युगांडा, मगर ये कि द बैटिंग वाज
लाइक टॉप नॉच। वो जो गुरबाज जिस तरह बैटिंग कर रहे था, और वो जो दोनों जरदान और गुरबाज, Yeah, Ibrahim. सॉलिड बैटिंग, देयर वाज नो स्लॉगिंग। Uh-huh. तो मजा आ रहा है वर्ल्ड कप में अभी तक। थोड़ा सा स्कोर एक आध जगह पे कम पड़ा है, मगर ये लेट्स सी। Uh-huh. टेम्परेचर इज राइजिंग सून, वो बल्कि बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है एक आध दिन में। आसिफ, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा हाँ आप अपने मैच के ऊपर भी आ जाते हैं उसके हाँ बाद, बट आप अपनी बिग टेक अवे। Yeah, I mean, look, it doesn't matter high scoring, low scoring. I think the bottom line is the World Cup is here. It's fun. There are 20 countries. We've never seen this before. And I think one thing which I find really refreshing is because a lot of these countries you see Pakistani Indian expats playing and filling up the teams, a team like Papua New Guinea, which had indigenous people to that country, you did not see expats playing, and they played really well. They gave the West Indies a very tough time. So that is where your real growth of cricket will come from countries that have their own native people playing and doing well. And so that was very refreshing to see. Look at the USA. Let's be honest, they're not a light team. I mean, they are on paper the minnows of the minnows, and it's a team that normally we would have overlooked. I think two things make Pakistan kind of take some pause and realize that this is not a joke, that you need to actually play properly. Maybe three things. The first one is that USA played very well. They chased 194 way more easily than we chase it against a team like Nepal. So it's not a team to be messed Team around like with. Canada. Or but I'm saying even like if they played Pakistan Oh against yeah, yeah. Nepal, Mm-hmm. it's not that easy, right? The way Yeah, the USA scored, we never score 195 easily, is what I'm saying. yeah. मुश्किल Except वो मुश्किल से वो आयरलैंड के गेम में पता नहीं हाँ एक आउटलायर था. दूसरी बात यह है कि I think what helps Pakistan a lot, even though it's of no relevance in the greater scheme of things, is the way that the USA beat Bangladesh in two matches, and then the third match the USA played their B team, and still it was not, Bangladesh won that, but that's a sobering thing because that makes the Pakistan that's a red flag. It makes you all of a sudden start paying attention, saying, we can't just sit here and talk about India and say India ke saath ye hoga, we need to win our matches that we're supposed to win, because at the end of the day, who knows what happens with India? That Pakistan Ireland match, everybody says that's going to be the decider of whether we advance or not. Well, not if we lose to Canada or not if we lose to the USA. So Yeah, right now, we should not be thinking of India at all. Our only number one focus should be USA. We need to beat the USA, treat it like a real team because they are a real team and they have nothing to lose. They're playing with house right. money. All the pressure is on us. प्लस हम So, या कभी खेले भी नहीं है ना यहाँ पे. दे हैव बिल्कुल. प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी जो टेक्सास के जो ग्राउंड है डैलस में. सो Yeah, and it's home at it. conditions for the US. And our people, our players are probably jet lagged from that useless series in England, and then they're going around shooting rodeo shoots and doing fundraisers at Masajid all around town. So they got to really focus and say, look, there's plenty to criticize Pakistan about. The warm up, the lead up was not ideal, but all that goes to the wayside. We start with a fresh slate. These are our players. We root for them. We hope that they win. It would be nice to get a good win against USA and then move on from there. चलें इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं. टीम के ऊपर आ जाते हैं जो मेन फोकस है इस एपिसोड का. लेट्स ईच ऑफ अस वी कैन पिक आवर ओन टीम एंड काइंड ऑफ जस्टिफाई इट. सो आप में से कौन स्टार्ट करना चाहेगा? आई थिंक 7-8 जो है स्लॉट्स, उसमें तो कोई डिबेट नहीं है, बट लास्ट 2-3 के अंदर आई बिलीव थोड़ा सा होगा. सो okay, maybe I can start and then Yeah, you you guys start. can. This is the Okay. least controversial. तो मेरा स्टार्ट ये है कि बाबर रिजवान ओपन. One down would be Usman Khan, 2 down would be Fakhar Zaman, 3 down would be Iftikhar or Imad depending on the situation. और so आपका इमाद और इफ्तिखार आ गए. उसके बाद जो है प्लेयर, उसके अंदर आई नो थोड़ी डिबेट होगी, बट आई एम गोइंग विद शादाब mainly as a batting all-rounder. And then I will have 3 pacers and 1 spinner. So I'll go with Abrar as the specialist spinner, and then I'll go with 3 pacers. 3 pacers में Shaheen is in. The next 2, frankly, I don't really care. आप उन बाकियों में से किसी 2 को पिक कर लो. Probably I would go with, for the first game, I'll go with Rauf and Amir and Shaheen, just because Naseem
lately has not been performing well. So just maybe give him a break. I'm not sure he's totally fit or not. So that would be my sort of 11. I'm glad you said a spinner and who is Abrar and didn't include Shadab in that category because right now he's not. Yeah, I said a specialist spinner. Yeah, I agree. He's not performing like a specialist spinner. डाल रहे हो तुम साइम में अब्रार टीम में अपनी? मैं साइम नहीं डाल रहा. साइम अब्रार अब्रार मैं डाल रहा हूँ. So I'm playing both अब्रार and शादाब से मैं 2 ओवर अगर जरूरत पड़ी तो कराऊंगा. और इमाद भी खेलेंगे, तो तीनों खेलेंगे. हाँ, तीनों. चल सही है. So basically मेरे लिए मेन चीज है कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर एक बैट्समैन चाहिए. अब वो या आजम खान हो सकता है या वो शादाब खान हो सकता है. साइम को या तो आप ओपन कराओ, राइट. ओपन उन्होंने करके देख लिया है, उसने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है. अब चूंकि क्लिक भी कर गई है और आई थिंक खुद भी यही चाह रहे हैं बाबर रिजवान के वो करें. तो आई डोंट थिंक they'll play साइम. They'll try him again. I mean, and maybe that's the right thing to do because he probably seems low on confidence. So अगर साइम को आप ओपन नहीं कराते तो मिडिल ऑर्डर पे तो बैट्समैन है नहीं. तो मिडिल ऑर्डर में फिर आपके पास जो स्क्वाड है, आप आगा सलमान को तो लेके नहीं गए, नियाजी को तो लेके नहीं गए आप. तो फिर आपके पास टाई पड़ जाती है या आजम खान के साथ या शादाब के. अब टू मी दोनों के फ्लॉज हैं. बोथ आर अंडर कॉन्फिडेंट, बोथ आर नॉट परफॉर्मिंग. मुझे ये लगता है कि आजम के साथ आप जाएंगे तो आजम इज जस्ट गिविंग अस वन थिंग व्हिच इज हिज बैटिंग, and so he has an upside potential, but we're just relying on that upside potential. You'll have to play him as a wicket keeper, and he's having a terrible time. He had a terrible time as a wicket keeper in England. So अगर विकेट कीपिंग उसकी अच्छी नहीं है, फील्ड में तो उसको आप रख नहीं सकते, बॉलिंग वो कराता नहीं है. सो वी जस्ट पिकिंग हिम एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन एंड दैट्स टू मच ऑफ अ रिस्क गिवन हिज करंट फॉर्म. शादाब का ये है कि वो आपको अगर आई नो कि अभी जो आखिरी मैच में उसने अंडा किया है और बॉलिंग भी उसकी सो ही थी, बट आई एम रिलाइंग ऑन द फैक्ट कि अगर एक चीज उसकी नहीं चली तो वो एटलीस्ट आपको फील्डिंग में यूटिलिटी दे देगा और बैटिंग में थोड़ी यूटिलिटी दे देगा. सो आई एम जस्ट गोना प्ले हिम लाइक मे बी यूज 2 overs, सी हाउ ही इज बॉलिंग, एंड देन बेसिकली प्ले हिम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर अलोंग विद हिम. सो दैट्स माय थिंकिंग. आप लोग क्या कहते हो? ये देखो, जो आप कह रहे हो वो मोस्ट लाइकली होना वही है. वो शादाब तो खेल रहा है, ठीक है, अब्रार नहीं खेलेंगे. शादाब खेलेगा, अब्रार को नहीं खिलाएंगे. फिर मसला होता है कि आजम, इमाद और शादाब होंगे. ये तीन नहीं खेलेंगे. फिर ये कि ख्याल से आजम हट जाएंगे. जो अच्छा मैं अगर मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि उस्मान खान शुड ओपन, क्योंकि मुल्तान में पिच खराब थी, अनइवन बाउंस था, स्पिन हो रही थी, and he's really good with spinners, and he's a good puller and cutter. So Babar can be come as a one down. I know it's not going to happen. Magar Rizwan and Usman can open against Minnow. Then Babar one down. Fakhr, there's no debate on it. Azam ko main yaar theek hai, criticism ho raha hai, but I will keep Azam. Shadab ko I will drop because I will go with Imad, Abrar, and Chacha. और पेसर में आई एग्री शाहीन इज इन. आमिर क्योंकि एज्ड है, आई वांट हिम इन इंडिया गेम, तो मैं शाहीन रऊफ के साथ तो जाऊंगा. मगर नसीम के रिदम नहीं आया जब से वो वापस आया है. आई थिंक नसीम आपको बिठा के बाहर नहीं रख सकते सर लॉन्ग वर्ल्ड कप. सो आई विल प्ले नसीम इन दिस गेम. और ऑफ कोर्स चाचा तो अब कंफर्म ही है क्योंकि मिडिल ऑर्डर हम लेके नहीं गए. तो दैट्स माय लेवल. आई थिंक बॉलिंग में तो as long as Shaheen is there, बाकी तो फैन बेस भी कोई इतना ज्यादा माइंड नहीं करेगी आप इनमें से किसको ड्रॉप करते हो या रेस्ट देते हो, सो टू स्पीक, राइट. असल फड्डा आ रहा है आपका. बस सेंस ये है ना कि आमिर और रऊफ का कुछ भी, रऊफ की तो चलो रिदम नजर आ रहा है, नसीम का तो रिदम ही नहीं है भाई. उसको कब खिलाओगे? फिर इंडिया के खिलाफ भी नहीं खिला सकते. आई गेस नसीम का ये है कि पेस करता है और पेस आई थिंक वुड ट्रबल यूएसए. आमिर that's why पेस नहीं. Yeah, that's so I can do mine. But I'll name my 11, and remember, this is the 11 that we want, not what we think will happen. But I have Saim Ayub coming back in the team, opening with Babar, with Usman coming 1 down, Fakhr coming 2 down, Rizwan as a floater coming 3 down based on the situation, then Iftikhar, Imad, Shaheen, Naseem, Rauf, and then Abrar.
without touching the batting part first, I want to tell you my reason for the bowling abroad, though. You need to have an attack spinner, wicket taker. I think we all agree about that. Like Sam just mentioned, minnow teams struggle against genuine pace. That is something we've seen throughout. They have never faced it. They don't know how to handle it. It is intimidating for them. It's a real psychological and practical edge. That's where Haris Rauf comes in. We need to have our fastest bowler. And Zadi about that, you want to be accurate, but that's why I put Haris Rauf in, because you want to overwhelm them with pace. And number two, of course, Shaheen is there. We know he's a wicket-taking bowler. I agree with Mudassir about Naseem. Look, to win, we need to have certain players firing on all cylinders. Naseem is not doing that now, and we need him to. So I think that's why I put Naseem in. Jahan tak batting ki baat hai, look, I've kept Azam out with great difficulty, and I think he will come back, and I want him to come back. But the bottom line is you have so many quote unquote openers in the top four. Usman is yet another one. So there's just, so I had to so the reason I brought Saim back in, like I said before, he is someone who I do not think that with Babar and Rizwan, we have a formula that can win the World Cup. And I understand they did well in one match. Let's just remember there's one match, and that too, when we say they did well, how do you define success? They scored 59 for 1 in the power play, which sounds good. On this very same pitch, England was 78 for no loss. How much of a success is that? I don't know. But, just 2 matches ago before that, Saim scored 45 and 29 balls, a good strike rate. So again, we know he's not going to fire on all cylinders. I think we need a very successful Saim in order to win the World Cup. Ian Bishop gave an interview just yesterday. He said Babar and Rizwan is not a long-term winning combination. So it's high risk. I totally understand it. Babar and Rizwan are safe. I want the high risk, high reward option. And this is a place where if Saim can rediscover some form on a flat wicket or on a wicket against an attack that maybe is not quite as challenging, maybe that'll give him some confidence going into India. So that's why I brought Simon. Usman, I think Usman, if he's not in the top 3, he can't be there. He needs to be in the top 3. Yeah, top 3. Yeah, one of the things I liked about Usman, and I'm going to say this, out of everybody on this Pakistan team, Usman in the match against England does not play dot balls. Yeah. Babar is one. Another issue I have with them is it's boundary, dot ball, dot ball. I mean, Babar had an over it was dot, boundary, dot, boundary. You say, do achhe chauke mare usne, but at the end of the day, it's just an 8-run over. That's an 160 score. So what I like about Usman is he goes for the hits, but if he's not hitting it, he's rotating strike. So that's very important to keep at the top. Spin ko bhi comfortable laga tha, jo ek aur 100%, 100%. And I know they'll never do this, but Rizwan is so you say you put these high-risk players in. You have Saim, you have Usman, you have Fakhr, high-risk players who are match winners, but if they fail, then what do? Well, that's where you have your stability. You have your Babar, I'm saying Iftikhar here is some stability, and that's where Rizwan can float in and out based on the situation. They're not going to do it. I think it's the best way to do not to do वो तो है. मगर एक चीज है कि ये वर्ल्ड कप जो जितना अभी तक हुआ है ना, these are not T20 pitches at all. तो अभी तक जो वर्ल्ड कप मैंने देखा है, ये पिचेस ठीक नहीं है. तो बाबर रिजवान इज नॉट अ बैड ऑप्शन. अगर हम बेल्टर पे खेल रहे होते ना इंडिया में, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप, डैलस वाला तो अच्छा लग रहा है ना, एटलीस्ट कनाडा यूएसए वाला. हाँ, डैलस के चलो ये गेम तो खैर इतना लो प्रेशर नहीं है. जो आगे जो टफ गेम्स आएंगे कैरेबियन में, इवन न्यूयॉर्क की जो पिच है, या आई थिंक फोर्ट लॉडरडेल की भी कोई इतनी अच्छी पिच नहीं है. तो बाबर रिजवान, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील एनीमोर. मगर पर्सनली आई थॉट कि हाँ, आई एग्री विद यू साइम. मैंने उस्मान खान डाला था कि ओपन करा दें, मगर ये हाई प्रेशर गेम से इंडिया वाला गेम हो गया, आगे गेम्स आएंगे. अब पिच अगर लगता है हमें कि 200 वाली नहीं है, तो बाबर रिजवान इज नॉट अ बैड आइडिया इन चेंजिंग. जो मैं देख रहा हूँ, हम तीनों के स्क्वाड्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, सिर्फ एक प्लेयर के अंदर. सो आई थिंक मुदस्सिर, यू हैव आजम, आई हैव शादाब, and Asif has time. Yeah. So basically, but pick your poison. Basically, no, and just so you know, for me, I'm bringing Azam back. Look, so we dropped Fakhr in the last World Cup for a while, brought him back, and he was refreshed and did well. That's what I'm hoping is the case for Saim, and that is what I'm doing for Azam now. I'm bringing Azam back. I know it's ahead of time for Canada, and then onwards. Maybe keep him out against India as well. The thing about Azam, which people say, Saim has articulated this, huh? 6 ओपनर है, we have only 2 middle order, चाचा और आजम. अगर आजम को नहीं खिलाना था, ये क्वेश्चन मार्क था, उसे लेके नहीं जाना चाहिए था. नहीं, और देखो, if you have him,
then you have to play him क्योंकि कोई है ही नहीं middle order आपके पास. हाँ, शादाब की theory I agree, मगर I personally I hate Ray Lucas ना. यार उसकी चलो बैटिंग को मैं कर लूं, मैं टॉलरेट वो भी कर लूं कि चलो अभी नहीं बाद में चल जाएगा. और स्पेशली आई एग्री कि जो छोटी टीमों के अगेंस्ट जो 130 किलोमीटर पर वो खड़े होके मारेगा छक्के, आई एग्री. बट जो 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 विकेट कीपिंग के अंदर वो मिसिंग कर रहा है. Okay, so let me address that. Let me address that. So this is, you know, like they say in life, you should never judge someone by their worst day. Yeah. So, there's no question Azam had an absolutely horrible match in England. Again, it's in England, conditions totally alien to this. I have no idea why we're making decisions based on 1 or 2 matches in England, but whatever it is. He had one absolutely forgettable, horrible match. You know, he got out for 0. It was a good ball, but he didn't look good in how he played it. And he had some absolutely easy, simple pedestrian drops, right? I've been watching Azam quite a lot now lately in leagues and in PSL and in other international matches. This is the only time I've seen him falter as a keeper. He's actually been a good keeper. So he had one horrible match. Now, are we going to judge him based on his worst performance ever? Because if you do that, Shadab has got a whole boatload of bad performances that we can, you know, judge. So I think it's not fair to do that when look, we're going to have to do really well against some of these easy teams like your Ireland, USA, Canada. We saw what Azam did against Ireland, which is again, you say 1 or 2 matches ठीक है. He scored 30. उस वक्त गेम खत्म थी, to be honest. जब वो आया था तो गेम तो आपके फखर ने बनाई थी. It could have been questionable. एक और चीज है you know, I think again the favoritism. I don't blame anyone. अगर मैं कैप्टन हूँगा ना, I will give Imad 2 overs in first 4 overs. Yes. And he's gonna bat at number 6 in my team. ना उसको बॉलिंग दे रहे हैं हम लोग क्योंकि वो नियत ठीक नहीं है ना. ना बैटिंग करने शादाब और ये लोग क्यों इमाद से ऊपर आते हैं. इमाद को कभी वो जो मैच हारे हैं इंग्लैंड में, वो खड़ा हुआ था, इतना लेट आया था. तो इमाद एक तो ऐसा नहीं है, आप इमाद को भी नंबर 6 खिला सकते हैं बजाय आप शादाब को जबरदस्ती बैटिंग के लिए खिलाएं. मूव इमाद लिटिल अप आफ्टर चाचा. अगर आपको आजम को नहीं खिलाना, you can still play Abrar, play 3 seamers. The problem is Shadab thinks he's a batsman now. No, Shadab I mean that's not a proper batsman. I don't think we can justify Shadab too. क्योंकि इमाद के होते हुए इमाद, Shadab, Abrar. I mean it's possible, but personally I don't like that idea. I would personally say that Shadab has caused us more harm than Azam has. I think so. Overall, not that one match, but overall, Shadab has, you know, it's a difference of giving up 160 versus 210. I mean, he gets blown away. तो 4 ओवर आप ना दो ना उसको. कौन कह रहा है आप उसको 4 ओवर दो? आप उसको 2 ओवर दो. 2 ओवर चाचा से कराओ. 2 overs भी ना दो उसको. Again, पिछले इंग्लैंड के मैच के अंदर he was, I think, the most economical bowler out of all. I mean, he's getting so many opportunities. I think Saim is a better bowler. I think Iftikhar is a better bowler. I think Imad is a better bowler. I'd even say Fakhr is a better spin bowler. क्योंकि वो तो फिर कैप्टनसी की गलती है ना. कैप्टन अगर यूटिलाइज नहीं कर रहा, I blame कैप्टन का यार है ना. That's the thing. He's his friend. That's why he's उसको खिला रहा है. कितने प्लेयर रह गए. आगा सलमान जाया हो रहा है चक्कर में. He can bowl 2 overs really good. I mean, he's not there, so you know. But I think Shadab is now almost, in my mind, Hassan Ali Part 2. You know, for so long he has not earned his spot in the team, and yet usko khilai ja rahe, it's like a no-brainer. He's going to be there no matter what. So I hope he does well, because I have no choice. I'm a Pakistan fan. I want Pakistan to do well. I hope he proves me wrong. But there's nothing that I've seen. कुछ लोग साइम के बारे में भी कहना शुरू कर दिया था कि फेल हुए जा रहा है. Saim at least scores 45 and 29 every 3 or 4 matches. He'll hit a big innings, maybe not a 50, but it get you off to the start that you want. Shadab, I don't remember the last time Shadab has taken wickets. Yeah, जो अच्छा 2 साल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से उसने कुछ नहीं किया है. उसकी जो एवरेज है डिजास्टर है. His batting has been I think good उसकी in some बैट such सही way. थी. न्यूजीलैंड सीरीज जो भी हुई है हमारे होम के अंदर, उसके अंदर I think I don't have the numbers right now, but I believe उसकी बैटिंग इतनी बुरी नहीं थी. That's what I was saying. His batting has been okay, उस and his नंबर fielding, of course, is great. हाँ, उस नंबर पे इमाद को भेज दो, वो भी कर देता तेरे. इमाद की तो बैटिंग ही नहीं आई उसको. अच्छा, चलें इस पे अगेन कोई ये तो डिबेट रहेगी. We do hope कि जिसको भी खिलाएं परफॉर्म करे. You know, at the end of the day, obviously they want Pakistan to win. कोई वो नहीं है कि किसी के साथ अगर आजम को पिक करते हैं, we hope it's the same आजम जो कि आयरलैंड के अगेंस्ट खेला था, rather than the आजम जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट. And शादाब को करते हैं. He can't do worse than that. Yeah. Azam cannot do worse than that. So आजम को मुझे ये भी डर लग रहा है कि यार मेंटली वो है गुड स्पेस पे कि नहीं. इसीलिए यूएसए के खिलाफ प्रोफाइल, इसीलिए you know कनाडा या यूएसए के खिलाफ उसको खिलाना चाहिए. I mean, I don't have him in this, but Canada जरूर 100%. I want him there
to lift up his confidence. That's why I want Simon this बट match. अब ये देखो ना, अगर खुदा ना खास्ता अगर हम हारते हैं यूएसए से, राइट, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस होगा कि आपने, लोगों ने तो फिर नहीं छोड़ना आपके आजम खान I को mean, या if we किसी lose because of him, that's one thing. But if we lose, it'll probably be because Shadab gives up 60 runs in his 4 overs. I will say this. We focus so much on the batting. Yeah. We really need to take a step back and look, because our bowling on paper, everyone says the greatest bowling attack in the world. They've really been falling short, and they have been failing. And I think we've been losing more matches from our bowling than our batting. So, we sit and talk about Azam and Saim and Usman. We need Naseem to bowl well. We need Shadab if he's there to bowl well. We need to absolutely get on focus. अच्छा चलिए, ये बात कर लेते हैं जो अभी आई एग्री के बॉलिंग के अंदर ज्यादा जरूरत है हमें, और ये भी हिस्टोरिकली इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जिस तरह आप बात कर रहे हो कि जो रिलेटिवली लेसर एस्टैब्लिश्ड टीम्स, मैंने तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज हु नोस, कल को हमें हराया उन्होंने, बट ये है कि इस तरह की जो टीमें होती हैं जो कि फास्ट पेस को इतने उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, इज देयर अ केस फॉर प्लेइंग 4 सीमर्स देन, फॉर जस्ट फॉर दिस गेम, कि आप 4 सीमर्स खिला दो, नसीम को भी खिला दो, आप रऊफ को भी खिला दो, आमिर को भी खिला दो, शादाब So को do you भी drop खिला दो। Shadab or do you drop Abrar? फिर तो आपको अबरार को हटाना पड़ेगा बिकॉज आपकी बैटिंग बड़ी वीक हो जाएगी। उस केस में तो फिर अबरार को हटाना पड़ेगा आपको, एंड देन यू यूज, आपके पास इमाद है फॉर द 5th बॉलर, इमाद है, और इफ वन ऑफ दीज पेसर्स हैज एन ऑफ डे, यू हैव चाचा टू फिल इन एन ओवर और 2 एज वेल। एक बात बताऊं, जब वी वर नंबर 1 इन T20, जब हम वर्ल्ड कप जीते थे और बाद में सरफराज के साथ, we were the first team who actually were used to use more spin than anybody else. आफरीदी के 100 होते थे, फिर एक जाने में अजमल था, फिर हफीज अच्छी खासी बॉल करता था। वही बाबर जब से आया था तो उसने हफीज को भी बॉल देनी बंद कर दी थी बाबर। तो हफीज और शाहिद 4 कराते थे, और एक शुरू में अजमल था, बाद में मे भी कोई पार्ट टाइमर कराता ये शाहिद आफरीदी भी था ना उस वक्त? हाँ, आफरीदी की बात ही कर रहा हूँ, शाहिद Okay, 4 right. कराता था। तो we used to have minimum 8 to 12 overs sometimes, ठीक है। अभी इंग्लैंड में सीरीज हुई है, उनके मोइन अली और वो जो है आपका लेग स्पिनर और लिविंगस्टन, आखिरी मैच में we played 4 fast bowler, they had 12 spin overs। कहने का मकसद ये है कि जो सीक्रेट रेसिपी है ना T20 की, इज नॉट फास्ट बॉलिंग एट ऑल। फास्ट बॉलरों की सिर्फ पिटाई होती है। T20s विन बाय स्पिनर्स, क्योंकि या तो वो पिटते नहीं है, अगर वो पिटते हैं तो वो विकेट लेते हैं। आपको पता है जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स हुए हैं T20 के, उसका मोस्ट विकेट टेकिंग जो बॉलर है वो हसरंगा है। सरप्राइज, राइट? लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स। सो स्पिनर्स आर द की, नॉट द पेसर्स एट ऑल। लेकिन स्पिनर्स की क्वालिटी भी होनी चाहिए ना फिर आपकी, अब वो ये तो अबरार उस क्वालिटी की तो नहीं है। हम लोगों का दिमाग, हम अबरार के हम लोगों ने पॉलिश लगा के रखा हुआ है अबरार को। इमाद को हम 3 ओवर ज्यादा कराते नहीं है, अबरार को हम खिलाते नहीं है, शदाब और हसन अली 4 ओवर करते हैं। तो हसन अली तो खैर नहीं खेल रहा, बट हाँ नहीं, राइट। तो इंग्लैंड में एक बात बता दो, हमने इंग्लैंड में 10 ओवर क्यों नहीं कराया स्पिन के आखिरी गेम में? जा रहे हैं हमारे चारों पेसर बेवकूफों की तरह। You cannot win T20 with 4 pacers. No, and दूसरी बात ये है कि जो Sam कह रहे कि against Minnows Pacers, I think it's extreme pace that really overwhelms them. And Amir doesn't have that, Shaheen Afridi doesn't have that. So I think really smart spin also overcomes Minnows. So I think that would be good. And also, look, if he's gonna play a role in the World Cup, Abrar needs match practice. He needs a confidence lifting, confidence boosting performance against the USA. He can do that. Because I mean, I know we're afraid to play spin against India, but Abrar is someone they have never seen before. So I think you need to get Abrar in the team. Pata nahi kyun hai wahan pe? I don't understand. Unless this has been Babar's master plan all along to save him for this, but Babar, we're giving him too much credit. He doesn't have the brain cells to pull that off. I just don't think. यार न्यूजीलैंड की सीरीज में उसको 2 मैचेस दिए थे, बट उसके बाद यू राइट, इंग्लैंड के अंदर he did well. So he did well. 5 economy है और उसने 3 or 4 wickets. हाँ नहीं, PSL बहुत अच्छा गया था। The batsmen did not know what he was bowling. They were completely bamboozled. That's the thing. फिर ये कैरेबियन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो साउथ अफ्रीका ने हराया श्रीलंका को अगेन न्यूयॉर्क में, तो पेसर ने आउट किया मगर महाराज नहीं बेचेगी। डेलिस की थोड़ी ट्रेडिशनल बैटिंग विकेट है। आई थिंक वी नीड कॉम्बिनेशन, थोड़ा स्पिन और फास्ट दोनों, 3 पेसेस प्लस स्पिन, एंड वी डू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। चाचा है, इमाद, शादाब अगर खेला शादाब होगा तो वी गोना हैव, आई होप कि बाबर यूज करे। बाबर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो स्पिन पर ट्रस्ट ही नहीं करता बिल्कुल भी। स्पिन ओवरऑल कम होता है हमारा
T20 में। तो चलें ये बताएं कि विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, जो हमारी एक हिस्टोरिकल भी रही है, वी फील मोर कॉन्फिडेंट चेजिंग। यार नहीं, आसिफ इज सेइंग he wants इस to chase. T20 में they should bat second in every game. Really? मेरा ख्याल से this team, हालांकि डर लग रहा होता है, वैसे आपस की बात है, ऑनेस्टली Yes. डर fine. लग रहा होता है कि जितना 120 रन भी हो तो डर ही लग रहा होता है, बट I'm रिकॉर्ड old हमारा school. रिलेटिवली बेहतर है Yeah, चेजिंग। they need to I'm an chase yeah. every game. I'm an old person. I'm old school. I say get the runs on the board and then attack all pace in the beginning, or not all pace, have Imad Wasim there, but just absolutely overwhelm them with your bowling and defend. Because I still think, while I've been criticizing our bowling, if you look at this team on paper, bowling is what's going to win us the World Cup if we win. We need to get and I feel like if they're all in form, including Shadab, maybe, this team can defend any total. आसिफ तो भाई, मसला वही है ना कि फॉर्म में है नहीं वो। this is not a new, but this is not a old bowling we have. ये जो bowling है ना, they restrict better. आप जितने भी जो भी टूर्नामेंट सिवाय एशिया कप के फाइनल के, इंडिया वाला मैच, वर्ल्ड कप फाइनल जो हमने 152 for 0 जो पहला मैच इंडिया को हराया एक दफा, वो भी चेस किया, तो ये बाबर के साथ there is something going on कि they are winning by chasing and they lose like 90% of matches by defending. Shaheen, Rauf, whatever, they cannot defend any score. So they are very good at restricting for some But if reason. दूसरा ये that's the चीज है case, कि then I would say in a match against the USA, if you feel like defending is our weak point, why not practice that? They can. In first game, they can. प्रैक्टिस करते करते हार ही ना जाए ना, मसला ये है, देखो, अपॉर्चुनिटी अगर जीतना हमसे है। हारते हैं, that's our fault. No matter what happens, it's going to be our fault. I'm right? keeping it simple. In this World Cup, if you win the toss, just bat second. They're as simple as that. Yeah, well, Because the एक चीज team हमारी माशाल्लाह ऐसी है ना. so I'm like I can understand where Asif is coming from as well, क्योंकि historically यही रहा है for many years कि पाकिस्तान was a better team posting a total, और as a fan अब हम इतना सालों से अब वो एक तरह से indoctrinate हो चुके हैं कि यार एक नर्वसनेस होती है चेजिंग में। लेकिन अगर मैं 100%. रीसेंट रिकॉर्ड देखूं, एक चीज जो है वो बार बार आ रही है कि जी बाबर, जब हम मैच हारते हैं, बाबर इज सेइंग वी वर 15 रन शॉर्ट, वी वर 20 रन शॉर्ट। आई थिंक जब हम पहले बैटिंग करते हैं समहाउ Exactly. हमें पता नहीं होता कि यार व्हाट इज अ गुड स्कोर। जब हम चेज कर रहे होते हैं, एटलीस्ट अगर हम 190 भी कर रहे हैं, 180 भी कर रहे हैं चेज, एटलीस्ट हमें पता होता है कि यार किस तरीके से हमने खेलना है। आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह 185 190 था, बट दे न्यू के यार अगर जीतना है तो अग्रेसिवली खेलना है, विकेटें जाती हैं जाएं, फखर और वो यार चलते एक रहे, और तो reason वो है ना, चीज़ है। Babar Rizwan likes to take time. That's the problem. If you होता है कि- chase, then you can't have Babar Rizwan No, chasing big total. अगर low scoring wickets हैं, bowling decent है, अगर हम if we keep restricting at 160 170, तो Babar Rizwan can आराम से अपना they can take, पहले बैटिंग करेंगे, they play 2 dot balls, वो slog करने में आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक जो इनका बैटिंग स्टाइल है, अगर as long the score is par or below par, I think इस वर्ल्ड कप में I'm not anticipating 200 that frequent. तो सेकंड में ही, और मुझे लगता है ओवरऑल अभी तुम स्टैट चेक करो, आई थिंक टीम विनिंग सेकंड विन मोस्ट गेम्स इन टूर्नामेंट्स। आई थिंक उसका रीजन है ना कि जो पहले बैटिंग करने जो टीम जाती है, अगर पिच ऑफ हो गई ना, तो अगर आप न्यूयॉर्क की पिच हो गई, कोई इस तरह टेढ़ी पिच है, अगर आप इफ यू वांट टू स्कोर 200, आप 100 पे आउट हो जाओगे फिर। इफ यू गो, तो इसमें आई थिंक टीम बैटिंग सेकंड, यू विल सी होपफुली इन दिस वर्ल्ड बट ये है कि अगर यूएस फर्स्ट बैटिंग करता है, तो अगर उन्होंने 180 190 बना दिए, Exactly. Yes. तो जिस तरह की भी उनकी बॉलिंग हो, जिस तरह की भी बॉलिंग हो, नहीं बनते, क्योंकि अली खान और वो जो बाकी उनका सरदार जी हैं 100%. उनके, Yeah. नहीं बनते। अगर यूएस I don't think Babar Rizwan can chase. If we're chasing 180 plus, then you've got to stick a pinch hitter up there, whether it's Usman or Saim or whoever. Babar Rizwan just use up deliveries. तो जो Their strike 59 rate उन्होंने together is. किया है अपने इंग्लैंड के खिलाफ, वो यू थिंक इज मोर ऑफ एन आउटलायर, या यू नॉट It is an outlier, and actually, it showed that it was underperforming for that particular pitch, because we saw what England did. They were 78 for no loss on the same pitch, right? खैर इंग्लैंड तो एक और ही लेवल खेल रहा था वो गेम, तो बट है, ये but you know, पिछले that's the 10 thing. मैचेस में हमारी बेस्ट पावर प्ले थी, बाय द वे, पिछले It 10 was, but on a T20 में। look, that was a ground which, if we scored 220, England would have still won in a cakewalk, right? So, for that particular pitch, at the beginning it looked great, but then when you take a step back and look at context and perspective, I don't think that ended up. They could have done more, and it's hard to say. It sounds very harsh, but when you see the ease with which England openers scored 78 for no loss, Marmarki, we got 59 for 1, which is fine. They did their job. Others, kind of fell afterwards. I don't think on that pitch that was good enough.
And I know that sounds very harsh, Yeah. but everything, you don't look at something in isolation. You look at how you did it and how the opposition is doing it and compare it. You know? जो यूएस की टीम है ना, अगर पहले बैटिंग करेगी ना, they cannot score more than 160. बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है यार, नहीं कर, they cannot score more than. On paper. वो जो छक्के पड़े हैं वो ठीक है, वो देखने में तो वो 100 मीटर के जा रहे हैं, बट वो बॉलिंग बहुत ही हलवा भी थी वैसे अगर देखा जाए तो. Yeah, I think खेलने से पहले 160 150 पे आउट हो जाएंगे वो, they can chase easy then. अगर शादाब is bowling, they'll score 190. क्योंकि अगर पहले खेले ना, खुद ना आउट हो जाए 150 पे, मसला ये है सारा. हाँ ये भी है, क्योंकि उनको अगर बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव हो गए कि यार वो देख लिया कि इन्होंने तो 190 चेज कर लिया था तो हमें 200 करना पड़ेगा. ये बताओ, keeping in line with the bar that we have maintained as a team in the recent past, if we lose to the USA, is it all over? No, because we can end up beating India and Ireland. We know Saim is the master of permutations. अगर यहाँ से ये जीते और वहाँ से बारिश में यूएस से पाकिस्तान नहीं हार रहा भाई, उनके हार रहा यूएस से. No, we should not. We should not lose, but मैं साइन कर देता हूँ, वास्प जो है 100% नहीं हारता पाकिस्तान. well, यार, अच्छा, वैसे ऑफिशियल जो अभी ऑड मार्केट्स में 10% यूएसए जा रहा है, 90% पाकिस्तान. तो I'll take 90%. आयरलैंड की गारंटी नहीं दे रहा, मगर यूएस से नहीं हारता पाकिस्तान. आयरलैंड में अबाउट 30-70 है पाकिस्तान के फेवर में. क्या 30 बहुत ज्यादा नहीं दे दिया right now it might change as the tournament progresses. यार ये तो बहुत इज्जत दे दिया आयरलैंड को यार. 10 भी बहुत ज्यादा, 30 किसने दे दिया उनको? नहीं, क्योंकि उन्होंने हराया ना एक गेम अभी आयरलैंड ने. It's a testament to the high performance of Ireland and the low performance of Pakistan lately. तो बेइज्जती हमारी के 30% अगर odds आ जाए. Ireland versus India 10-90 है by the way. Ireland versus India. India is 90, Ireland is 10. I think against Ireland, if Azam plays, it becomes 90-10. Exactly. है ना? चलें जी, और कुछ रह गए, but I think we are out of time as well, जो हम एक estimated time हम रखते हैं. तो चलें, we hope you guys are as excited as we are. So excited. And we hope the team performs जो उसकी capability है. I know अभी recent कुछ performances up and down रही हैं. Leading up इतना कोई अच्छी हमारी वो चीज़ नहीं, preparation भी नहीं हो सकी. Unfortunately warm up games भी नहीं हो सके. But ये है कि पाकिस्तान, you can't rule out पाकिस्तान. और हम last World Cup के अंदर भी we lost to Zimbabwe, and then who would have predicted at that stage कि हम final खेल जाएंगे. So ये है कि we're starting this tournament optimistic, and hopefully we start off on the right foot और एक dominating performance के साथ hopefully USA को आए. तो हम कोशिश करेंगे कि as the World Cup progresses आपके साथ जुड़े रहें और आपको और episodes आपके साथ share करते रहें. Okay जी, thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद.